सो कलिंग वार तो ये बहुत इंपोर्टेंट करना तुम सिलेबस रे भी अच्छी तो खाराबला ऑलरेडी हमें देखी देछे से 13 इयर्स ऑफ रूल ऑफ द खाराबला इन द लास्ट लेक्चर में देखी थे मॉर्निंग सेशन. Now we will go through the Kalinga war कारण आपको हमको सारी पड़े because we need to finish as this test is going to be the next month of fast रे अच्छी एथमे हमको finish करिया पड़े. So modern day जदि हमें already morning session रे मुझे तेरा point कही देती कि अशोका जो वार थिला कलिंग वार के तेरा point कही देती morning session रे है ना. So we will go through the little bit हम देखवा कि introduction point और part तुम देखि परिबो कि जो modern day Odisha तुम देखि परिबो जहाँ the modern day Odisha passed under the names of Kalinga, Utkala, Odisha different period रे and वर्तमान तुमरो तापर ओडिशा भी थिला ये थिला देन हला तुमरो ओडिशा वर्तमान हला ओडिशा तो बुझि परछ so these are the different named from time to time ये पास करे छे ओडिशा so from that means तापर ओडिशा तापर ओडिशा है ना तो 97 अमेंडमेंट बुझि परछ so 97 अमेंडमेंट 96 96 अमेंडमेंट है ना सो 96 अमेंडमेंट कौन करागला ओडिशा को ओडिशा करागला बुझि परछ ना चेंज करागला बहुत बढ़िया सो ओडिशा दैट मींस हम देखिबा डिराइव फ्रॉम द ओड्रो एंड ओड्रा दैट इज द व्हाट और द ओड्रो का जोटा कि ना सो दैट मींस जो नाट आसे जो ओडिशा एक वर्ड आसे दैट इज यूड्रा ओड्रा और ओड्रा का इट्स पीपल फील प्राउड remember the names of Kalinga and Utkal for the past glory of their ancestor. ये जो पॉइंट हम देखुचे दैट मींस ओनली लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री कलिंगा वार पूर्व हिस्ट्री हम देखुचे दैट मींस ओडिशा पास्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट ना देखि जाय एंड पीपल्स ऑफ ओडिशा दे फील सेति पे कलिंग एबे भी बहुत जगह हम कलिंग कहूचे उत्कल तो एबे तो बहुत जगह उत्कल लिखा हुई बुझो ओडिशा तो ये तो तोर ओडिशा ये तो लेटेस्ट हम कहबो ओडिशा कहूचे मॉडर्न टाइम रे genuine Kalinga is the Ganga. That is what Ganga to Godavari and that means from the जो गंगा रही तमर गंगा टू गोदावरी तार एक्सटेंशन थिला that is what Kalinga Godrat sea to Amarkantak mountain. That means जो genuine Kalinga जहारो territory जदि हम territorial location of Kalinga genuinely जदि हम कहबा तार extension कोठू from the Ganga to Godavari. From the Ganga to Godavari that would be the extension ये रहा तुम्हारा extension of Odisha or the Utkal. So from that means Kalinga Gotra sea to Amarkantak और simple तुम्हें कहबो कि up to पूरा हमर जो बे ऑफ बंगाल है ना ये पट रही थी और पूरा आंध्र प्रदेश टू नहीं historical division करा जाय and that is what fractionation are also so many that means extension देखिबा up to Amarkantak जाय रही थी पूरा में एमपी इस रीजन हम देखिबा छत्तीसगढ़ से हमरे ये कलिंगा अंडर आसुतला दैट मींस द जेन्युइन एक्सटेंशन रहइबो गोदावरी टू गंगा जेमति कि हमें सबटू इंपोर्टेंट हैला कि फॉर एग्जांपल खराबुला टाइम रे हमें देखितले अप टू गंगा बुझि परछन तो एपटे गोदावरी जाय था कृष्णा गोदावरी जाय थिला बुझिबो एक्सटेंशन सो ये हमें देखो जेन्युइन एक्सटेंशन थिला एंड दो द हिस्टोरिकल डिवीजन ऑफ द दैट में हम कह द फ्रैक्शनेशन are also so many तो बाकी तो धीरे धीरे से तो फ्रैक्शन हबो and that would be divided into many small parts हबो तो हमें हिस्ट्री देखु चाहिए कि what was the history of Odisha or that is the what ओड्रो तो सी टाइम रो कोन थिला कलिंग अबाउट कॉल रो हिस्ट्री कोन ये थिला एक्सटेंशन ये रे बतमरो एक्सटेंशन दिस वुड बी एक्सटेंशन एट द पास्ट तो ये पास्ट रो एक्सटेंशन पास्ट रो एक्सटेंशन देन हम देखिबा जो कलिंग है ना वाज डिस्टिंक्ट ये गोटे भिन्न थिला जोटा कि यूनिक थिला कौन पाई बिकॉज ऑफ हिज ज्योग्राफी बिकॉज ऑफ हिज आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ एटीट्यूड ऑफ द पीपल एथि जो कलिंगास द कलिंगास द पीपल ऑफ कलिंगा देयर एटीट्यूड एंड देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन मेक देम प्राउड बुझिबो जो कलिंगा रही छी they people of Kalinga they feel pride because of their geographical location because of the peculiarities in terms of the culture in terms of culture
in terms of language, in terms of let's say other identities ବୁଝିପାରୁଛ ସେଥିପାଇଁ that is the peculiarities achieved by the Kalingas with their brave attitude supported by the geography. And the geography of Odisha is such like that helps the peoples of the Odisha to preserve their culture, to have that identity ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ ଯୋଉ identity that the sense of identity ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ ବୁଝିବ ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ कि इंडियन द सेंस ऑफ आइडेंटिटी द सेंस ऑफ प्राइडनेस ये हमको देखने को मिलता दैट दैट मेक्स द पर्सन बुझिपारे तो से एटीट्यूड गोटे आसी जाए तो दैट कलिंगस जो हमें देखिए द पीपल्स ऑफ दिस लैंड वेरी लैंड दे आर हैविंग यूनिक एटीट्यूड यूनिक अफेक्शन यूनिक गोटे हम कहि पारे फॉर इट्स peculiarities the peculiarities है तुम्हारा art and culture language food habits all things would be comes under the peculiarities the distinct peculiarities from the surrounding region to देखिबा आर geography अलगा आर culture अलगा आर religion अलगा the peculiarities जो हम कहबा ना जो ये हमें सिंपल दैट मींस ओरिजिनल ओडिसा रो जदी हमें लोकेशन तुम देखिबो एपटे बेंगल सेपटे आंध्र प्रदेश तो गोदावरी टू हमें गंगा जाए देखिले एंड फ्रॉम यदि तुम कहबा कि जो काकीनाडा ऑल दिस रीजन टू अप टू अमरकंटक द कलिंग वार जोटा हेतला तमर 261 BC 261 BC during the Ashoka reign of Ashoka that is the Mauryan empire है ना the emperor the Mauryan emperor Ashoka the great बुझो तो चंद्रगुप्त मौर्य तो जानते द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी विथ द हेल्प ऑफ हुम चाणक्य बुझिपरछ जे कि धनानंद को मारि थे बुझिपरछ नंद लास्ट नंद लोक मारि के बुझिपरछ देन ही बिकम द रूलर बुझिपरछ तो चंद्रगुप्त मौर्य देन आसो कि बिंदुसारा एंड द बिंदुसारा रो सन होची कि अशोका बुझिपरछ बोथ बिंदुसारा एंड चंद्रगुप्त मौर्य they didn't invade the Kalinga बुझिपरछ though the Kalinga was close to the proximity to their border and having also sharing the border but they didn't that means annexed or they didn't try to try to kari pariya but एमती किसी तांगर planning न थिला the Kalinga war was fought between the the Mauryan empire the great Mauryan empire तो सबसे तो जानी चाहिए the founder of the Mauryan empire Chandragupta Maurya है ना तो Chandragupta Maurya with the help of Chanakya and under the Ashoka तापर चंद्रगुप्त मौर्य पर आसीबो कि बिंदुसारा है ना बिंदुसारा तो बिंदुसारा आसीबो हा कि नहीं तो बिंदुसारा रो सन तो फास्ट आसीबो तमरो चंद्रगुप्त मौर्य then बिंदुसारा then आसीबो Ashoka so that would be the chronology of that dynasty बुझिबछन ता पूर्व रहिबो नंदस नंदस पूर्व किए थिला नागस देवे तो नागस तान से मन थो जो तमरो ये रहिछि दैट इज द मौर्यन डायनेस्टी इज अ मौर्यन डायनेस्टी ऑफ व्हाट मगध मौर्यन डायनेस्टी ऑफ मगध मौर्यन वर रूलिंग व्हाट मगध हां कि नहीं तो मगध वाज आर्यर रूल्ड बाय हुम नंदस ता पूर्व नंदस नंदस पूर्व किए थिला नागस बुझिबछन नागस बट मौर्यन पर किए आसला शुंगस शुंगस मौर्यन को किए डिफीट कला शुंगस तो देन आसला शुंगस देन शुंगस पर किए आसीबो गुप्तास देन है ना देन तो यदि हम देखबा आसीबो कि तो छोटो मोटो खत्म हो जो तापर तो गुप्तास तो अप एंड डाउन चली था सेमती तो मौर्यन यदि पर मौर्यन डायनेस्टी पर इंडिया रे सबसे स्ट्रांगेस्ट डायनेस्टी आसला गुप्तास देन गुप्तास पर मुगल बाकी तो ट्रांजिशन टाइम ना बाकी गुड़ा जे ट्रांजिशन टाइम हाँ तो मौर्यन दैट मींस ये जो अशोका द ग्रेट है ना अच्छा ये कलिंग वार करते द फ्यूडल तो दैट मींस हमें देखो अशोका द ग्रेट है ना एक अच्छा एतिक तो हे परियो जो माने ऑनलाइन रोचे वॉइस ऑफ ठीक ठाक क्लियर एंड लाउड एनफ थैंक यू सो है ना दैट मींस हमें कहबा ये देखिले the Kalinga that means Ashoka the great Ashoka यदि हमें कहबा who always had a thought in mind that Kalinga is a feudal state to the Mauryan empire बुझिबछ तो जोटा कि a feudal republic located on the coast of the present day Indian state of Odisha northern part of Andhra Pradesh तो जोटा हमरो हमें कहछे कलिंग feudal अर्थात कोन फ्यूडल कहले गोटे लैडर थाए फॉर एग्जांपल फ्यूडल रो केमती फिगर थाए देखो ये रहइबो देन इट वुड बी 2 भाबो जणे रहला हेड टॉप रे रहला हेड किंग
ता तले रहइबो नोबेल्स नोबेल्स तले आउ टिके डिवाइड हेबो तो डिवाइड हेई शेषरे पीजांट आसीबो बुझि परछो कि सो दैट वुड बी द फ्यूडल लैडर एमान को कुआ जे एमती डिवाइड हेई जिवो है ना बुझि परबो नै तो सोसाइटी वुड पूरा टॉप रे रहइबो तमरा किंग पूरा टॉप रे रहइबो किंग तो एई भले सिस्टम को कुआ जे फ्यूडल सिस्टम आ ये फ्यूडल सिस्टम ओरिजिन हेतला यूरोप रे तो फ्यूडल रे कोन करा जाय लैंड वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बुझि परछन लैंड दिया छिबो तो सपोज जने राजा मतलब बहुत बड़ राजा अछि से तार छोट छोट जमीदार ता अंडर बहुत सारा जमीदार रहिबो से गोटे जमीदार के एतिकी जगह तमर देखभाल रखियो बट मते टैक्स दे देबो राजा को दे देबो सो बुझो so that is this system is called as the feudal system बुझो that kind of system is known as the feudal system so Ashoka the great Mauryan ruler he had always thought in the mind and believed that the Kalinga is a feudal state it's not independent ये independent नहीं ये गोटे feudal comes under the Mauryan empire बुझो आर independent को से केबे भी accept करिवो नहीं कि Kalinga would be declared as the independent for example हम कहै ताइवान ताइवान को कौन कहे चाइना के भी टॉलरेट करबन कि ताइवान इज इंडिपेंडेंट कंट्री से कौन कहूचे इज द पार्ट ऑफ मेनलैंड ऑफ चाइना बट हैविंग ऑटोनोमस तार ऑटोनोमस अछि बट इट्स नॉट ए सेपरेट कंट्री नो हां कि वन चाइना पॉलिसी जा कौन कहन वन चाइना पॉलिसी तो वन चाइना द्वितीय चाइना नै दैट मींस सब टेरिटरी तार बुझि परछ हांगकांग ये सब तार वन चाइना पॉलिसी तो सेमती फ्यूडल सिस्टम रे जदे Ashoka the great and the Kalinga state a feudal republic कहले बुझि परिबो that was ruled by the people ना the located on the coast of the present day Indian state of Andhra Pradesh ए region को नेकी ओडिसा थिला the Kalinga city the capital already मु तुम कहथि Srikakulam district आज सकाळे कहथि तुमको है ना so that was the Andhra Pradesh को तुम कहथि morning so the capital used to be the Kalinga that time the Kalinga kingdom the capital was in Andhra Pradesh Srikakulam district Baharupur pare asi jay Srikakulam district बुझि परछन so there it was the capital city was there that is ना तो ये थिला Kalinga capital थिला that time there was the capital the Kalinga war if देखबो that is this is the but Odisha रा में history में देखबे कि ओडिशा केमिति आसिला from time to time केमिति move करूची ना में historical background एबे देखिबा the imperial Nandas obviously हमें discuss करले कि it was Nandas were ruling at the 4th century BC the Nandas were ruling 4th century BC ना बुझि पन मतलब 400 let's say 410 एमती BC बुझि 4th century BC रे रूल करतले बट अशोका कोन 2nd century अशोका होची कोन 2nd century 160 261 that is third 2nd to 3rd century में कहि परिबा a mid of 3rd century में कहि परिबा so that was there है ना 2nd to 3rd century so that was there तो ये जो तमरा नंदस थिला नंदस पूर्व मु कहले देयर वाज द नागस they were also ruling there Jabyu so that is Mahapadmananda the most powerful ruler of the Nanda dynasty had tried to bring the Kalinga within its political domain कारण आप पूर्व मु तुमको कहि देली कि ये that means जे नंदस थिले ना they were also the Magadha ये माने भी कोठी थिले Magadha रे they were also ruling the Magadha बुझि परछन Nandas were ruling so that time Kalinga was also there but they tried the Mahapadmananda कथा नहीं जो कि धनानंद कथा नहीं जो they tried hard to annex the Odisha or that time I would say Kalinga that time it was Kalinga Odisha तो ना नथिला it was Kalinga they tried to annex the Kalinga political domains रे आनिया पे बुझि परछन but that didn't happen there from the Hathigumpa inscription हम सकाळे भी देखितले it found that the Nanda Rajas dug a canal near that is what Tansuli ये आज सकाळे पढितले जहा को रिवाइव करथिले कि खारबेल जहा को रिवाइव करथिले खारबेल जहा इरिगेशन वगैरह से करैथिले इकोनॉमी ऊपर फोकस करथिले बुझि परछन that we talked about in the morning session in the Kalinga which extended by the Kharavela later on ये already हमें पढ़ि सारिछे बुझि परछन that means the irrigation system as ancient as the Mauryas बुझि परछन in Odisha canal system then he had taken away the Kalinga Jina ये Jina to नहीं जाइतला मु तुमको कहले that time it was Mahameghavana बुझियो contemporary of Nandas the Nandas रो contemporary थिले Nandas were ruling Magadha तो से Jina कोठी रहबो Magadha ताकू नहीं कि आसीबो के फाइनली खराबेला बुझि परछन so that the Nandas they took away the Jina the image बुझि परछन of the Kalinga the pride of Kalinga that was taken away जहा को कि खराबेला रिटर्न करके आनिबे है ना
So Kalinga from the Kalinga, and the Kharavalla could bring back the image from the Magadha during his reign. ये तो हम already हमने पढ़ी सारिचे, सकाले पढ़ी सारिचे. When then जेतेबले अच्छा जेतेबले आमे कहबा कलिंग जो खाराबला ये जो इमेज को नहीं किया आसले, who were ruling the Magadha? Sungas. They were the Sungas. बुझी पड़छन. कहना सेतेबले तो almost खत्म हे गेला. अशोक तो नहीं ना बुझी पड़छन. तो ये सुंगर्स माने आसी इतले सेतेबले को तो बुझी पड़छन. The influence of the Nanda kings was short-lived. ये बहुत अल्प समय पर थिला. बट मगध हमें कहि पर सिंपल तो मगधर इन्फ्लुएंस लॉन्ग टाइम पे रही है मगध हूँ गोटे एरिया जहाँ डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट रूलर रूल करुच्ची द सक्सेसर ऑफ द महा दैट इज व्हाट पद्मानंद वर वीक से माने आउ बाकी ट्राई कले नहीं कि कलिंग को अनेक्स करने ड्रीम कले ना बुझीपार ना तो महापद्मानंद हु टुक द इमेज ऑफ जिन्हा बट बाकी जो सक्सेसर थे दे वर वीक एनफ से तो आसना चंद्रगुप्त मौर्य who took over the Magadha and become and established that is the what हम कहबा जाको Mauryan dynasty. During this time Chandragupta Maurya यदि हम देखिबा so during the time of Chandragupta Maurya the Kalinga was an independent state. The Chandragupta Maurya time the founder of Maurya dynasty it was independent. ये independent थिला फिर भी आपको annex के करे independent थिला. And Chandragupta Maurya time रे ताली जानी लो केमिति then how that was independent Kalinga was independent during the Chandragupta Maurya कारण Chandragupta Maurya time रे यदि तम मन अछि है ना ये क्या आछबो Megasthenes आछबो Megasthenes को किए पठैतिले Seleucus है ना Seleucus the Greek ruler Seleucus काहे पठैतिले ना ता पूर्व Alexander ता पूर्व असला कि Alexander. So to have a diplomatic relation, the Seleucus sent the Megasthenes who wrote the Indica. कौन कहती है Indica? हाँ कि नहीं? The Indica is the source of ancient history for India. जेहेतु Indian historian माने history लेखु नथिले, so that serves as the source of the history. Indica. बुझी पड़छ ना? तो Indica को के बुझी पड़छ ना? Megasthenes. ये तो जानते समस्त पढ़िछ है ना Megasthenes. तो या को ये कनेक्ट कर दैट मीन्स द मेगास्थेनेस रो जो इंडिका रो जना पड़े कि कलिंग वाज इंडिपेंडेंट यदि तुमको पचारो कि व्हाट इज द सोर्स टू नो अबाउट द वेदर कलिंग वाज इंडिपेंडेंट और नॉट दैट टॉक अबाउट द इंडिका रिटन बाय हुम मेगास्थेनेस है ना द ग्रीक फिलोसोफर जब हम फिलोसोफर कहि परिबा एम्बेसडर कहि परिबो बुझबो sent by Seleucus. The Megasthenes account. So it is already लिखा भी है Megasthenes account. It is very clear that the Kalinga was very powerful state with a strong elephant force and the neighbor of Magadha. Sorry, and was the neighbor of Magadha. Already border share करूछ. तो सेतिपे आपको annex करी नथिले. बुझि परछन. तो इटा जणा पड़िला. Although both Chandragupta and that is what Bimbisara, the son of the Kakatiya, that is a Bhattiya, were very strong ruler and the great conqueror, but they didn't dare to annex the Kalinga with their empire. तो केबे dare कर नथिले. But Ashoka को कौन करिवो सेटा tolerate हबो नाही. That was a symbol of pride for him. मु सकाळी कहितली तमकू कि that was not tolerated by Ashoka. Like the Chandragupta Maurya and the Bimbisara, they were enough strong but they never dared to attack the Kalinga करि नथिले बुझि बुझ सो कारण एटा हमकु जणा Megasthenes account रो जणा पड़े it was free itself didn't had any compulsion from the Magadha बुझि बुझ ये कौन सी compulsion नथिला अच्छा तमन को बुझा पड़ुची समस्त को everyone so their empire but it was यदि हम देखो Chandragupta Maurya had never attempted to annex. This is very important. Had never मतलब केबी भी से करी नहीं तुमको कहबे he twice thrice attempt करथले एमती पछाडी परे during his that means हमें कहबा reign or during his time but the Bindusara the son of Chandragupta had also not fought that is the fought with the people of the Kalinga से भी सेमती किसी करी नांती so it was a historic that is what historic necessity on the part of Ashoka to conquer the Kalinga for the pride simple pride
ऑलरेडी मॉर्निंग रे कहथि कि ये जेहेतु भाव as it was as proximity to the Magadha and the Mauryan, those who were sharing the border with the Kalinga, but despite one of the largest territories they built in the Asia, but they never tried to attempt, even never attempt to annex that one. So what was the reason? The reason of that like the fear, one kind of fear that whether we would be able to or not to annex that one. So that was a symbol of pride and the जो history थिला ना, जो historic necessity कि आपको भावुतले से fear को खत्म करो, अशोका कहले से fear को खत्म करो, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କିଛି ନଥିଲା। ଅଶୋକା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ଆମେ କହିବା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କଥା ନେଇଯାଅ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ହି ଡିଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଅର୍ ହି ଆନେକ୍ସଡ୍ ସୋ ମେନି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍। ତ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବେଶୀ କିଛି ବଞ୍ଚି ନଥିଲା ଆନେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବେଟର ଟୁ ଆନେକ୍ସ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ କିଛି ଏମିତି କାମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସେ ଗ୍ଲୋରି ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏନ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ନେସେସିଟି or the history demanded that one कि if Magadha जदि एते strong then why they are not attempting to annex the Kalinga, कौन पाई, why didn't they never attempt? तो अशोक से भाविले कि ठीक अछि, if this is the symbol of pride बुझिबो then I will do that one। तो ये देखिबा the causes, so that is why then I'm kiba cumulative kind of war is whenever the war occurs that will have the cumulative impact, that is what effect, so it will have so many things fall into the line and as a result that will be come out in form of the war। जेतले भी war होय कोन गोटे सिंगल causes ପାଇଁ जेनी तो war always, but war is not solution ध्यान से मत, because सेति ପାଇଁ कहै जे ना one who knows the result of war he would not fight for the war or he would not go for the war। जे result जानि छै ना war रो से के war को जीवनी, because war रो result होछि always worst, बुझि परछ नै? war होछि सबले जेमति कि सुदान कथा नै जाओ, देखो कौन होछि लोक खाइको पाउनी कोविड रे जुझुचंती सेथरे जदि war करिवो कोन हबो, so that will downgrade the economy of the country economy जीवो, but बुझि परछ त ये जाबे हो the causes of the Kalingas सेति हम देखिबा the Kalinga war रो causes हम देखिबा। The main reasons कौन, what was the reason for the invading the Kalinga were both political economical, obviously तीनटा causes थाए political economical social, तीनटा causes compulsory थाए war रो political economical cultural, but that cultural also if I prove to the present time that also again it could be proven। For example I would say Ukraine कथा नहीं जाओ, Ukraine is a political issue for Russia because USSR हाँ कि नहीं देव जो हम कहबा जो Soviet Union थिला, the legacy of the Soviet Union and Putin wants to get back that one, that legacy the Soviet Union, बुझि परछ ना? So that is the political ambitious हम कहबा political cause। the social so economic because of the abundant minerals and one of the largest country in the European जदि तमे देखिबो यूरोप रो सबसे largest country किए यूक्रेन, बुझि परछ? तो सब लार्जेस्ट कंट्री रशिया को मतलब छाड़ दियो कहना बोथ रे आसुची तो रशिया को जे छाड़ देबो देन यूक्रेन इज द लार्जेस्ट कंट्री, बुझि परछ नै? रशिया को छाड़ला पर लार्जेस्ट यूक्रेन एंड हैविंग एम्पल एंड वन ऑफ द कॉन्डम जाको कहै छै द ग्रेनरी हाउस ऑफ यूरोप, पूरा व्हीट बास्केट ऑफ यूरोप भी कहै छै, पूरा तमरो जो कोन द स्टेप जो अछि तमरो ग्रासलैंड ये सेठी रहछि, वाटर अछि, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल्स, आयरन ओर, स्टील प्लांट, नाविगेशन सब किछि ता पाखर अछि। तो तेणु करी कि ये बहुत जरूरी फॉर द इकोनॉमी सिग्निफिकेंस जदि हम देखिबा तो वार सब बेले न प्रेजेंट टाइम रे भी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को तुम ऐड करि परिबो। कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑलवेज और रशिया जो एरिया को कैप्चर करके बर्तमान रखी डॉनबास एंड द लुआस रीजन दैट इज द रशियन spoken peoples are there, those who the where the Russian language is being spoke, बुझि परछ ना? तो सी रीजन को से कैप्चर करू because of the affinity, cultural affinity is there, बुझि परछ ना? Because without cultural affinity you can't hold a region for the long period of time। जदि गोटे cultural affinity थिबो then you would be able to that मतलब capture that area for the long period of time, नल ताको रोकी परिबो नाही, because without the support of the local people war can't be sustained for the long period of time। के भी हेई परिबो लोक खाइयो पाइबेन मर जिवे, अशोक मतलब अलेक्जेंडर तो पळै छी बाकी ते छाड़, बुझि परछ ना? लोकल लोकर बिना सपोर्ट फॉर एग्जांपल ब्रिटिश काहे कि एते वर्ष शासन करना लोकल लोकंकर सपोर्ट जमीदार माने सपोर्ट करी, बुझि परछ कि ना? सेति पे बदे विदाउट लोकल पीपल रे के रूल करि परिबो ना,
That is true. So here we will also go through the political, social and the cultural significance of the war. That significance and the importance as well. The political let's say in terms of the political, what was the political repercussion for the Ashoka to invade the Kalinga? Because territorial extension to gain the new territory. ताकू दरकार new territory दरकार थिला. New territory or expansion or simple expansion of territory. तो territorial expansion ताकू दरकार थिला. बुझिपारछ ना? Because से टाइम रे गोटे fashion थिला. That was a fashion. जदि आमे कहबा it was a fashion for territory. है ना? तो territory पे गोटे fashion थिला. बुझिपारछ ना? New territory को annex करिबा. ये से टाइम रे बहुत चलथिला. ताकू annex करिबा. So that is why Ashoka time रे जदि आमे देखो Ashoka's father the king Bindusara, the Mauryan empire based in the Magadha was following a policy of territorial expansion. तो ऑलरेडी आम देखले कि टेरिटोरियल एक्सपांशन थिला से समय एटा गोटे फैशन थिला कि जेते बड़ राजा सेते बड़ राज्य सिंपल. तो अशोका कहले दैट मीन्स जेतिक एरिया जोड़ा बंची छि ताकू भी मु एनेक्स कर देबी. बुझि परछन ताकू भी से एनेक्स कर देबो मिसै देबो. सो दैट वाज द टेरिटोरियल एक्सपांशन. इट वाज ए फैशन बाय दैट टाइम. ओके ना ये सेते बड़र फैशन थिला. सो कलिंग वाज अंडर द मगध कंट्रोल ड्यूरिंग दैट इज व्हाट नंद रूल किछि समय पई, but regained the independence with the beginning of the ruler of the Mauryas. तो जेतबे नंदोस थिले ना that time it was like a feudal. ये सेतबे feudal थिला ध्यान से मनथो. That time it was a feudal when Nandas were ruling, because Nanda used to attack जेमते कि the image of Kalinga that was taken by the Nandas. बुझिपारछ. So that time it was a feudal state. तेणु अशोका कहबा कथा कि जेहेतु ये नंदो टाइम रे गोटे फ्यूडल थिला आमो टाइम रे भी रहिबो. इट शुड नॉट डिक्लेयर इटसेल्फ इंडिपेंडेंट. बुझ परछ ने? तो हिस्टोरिकल लेगेसी रहिबा दरकार. दे शुड नॉट डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट. तो ये प्रॉब्लम थिला अशोका सहित. तो अशोका कहले ये जेतबे इंडिपेंडेंट निजे को डिक्लेयर कर देले कलिंग आफ्टर द फिनिश और आफ्टर द आम कहबा कि नंदस पर जेतबे मौर्यस आसिला इनिशियली, बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य कथा नै जो कि बिंदुसारा so they never invade. तो तांको टाइम रे जेतबे ये निजे को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देले द हिस्टोरिकल लेगेसी वाज डिस्टर्ब्ड. बुझि परछन तेणु करके ये चाहिले कि नाइ सेटा न हो. So that was considered a great setback for the traditional policy of the territorial expansion of the Magadha empire, that is the emperors, and was considered to be the loss of the political prestige. जोटा मु तुमके एबे कहली कि historical legacy को disturb कला. Prestige of the Mauryas merely imperative to reduce the Kalinga to complete subjugation. That means कहले ठीक अछि, if you are declaring yourself the independent, it would be better to, and we are also having, but we need to back our prestige, to gain the prestige, to protect our that what lordship जाको हम कहि परिबा. सेति पई कहले ठीक अछि, then it was imperative to reduce the Kalinga into complete subjugation or complete subjection अर्थात निज अंडर को आनी दबा complete subjection. तो ये थिला imperative. It was imperative कहले political imperative. Pride, otherwise that will harm the जो मगधर बुझि परछ ने ये जो मगधर जो pride ना that will harm कारण ये निज को independent declare कर दउची. बुझि परछ. So that was the political issue. तो ये रहबो तुमरो कोन political issue थिला. It was political issue. It was territorial dispute हम कहि परिबा. हां कि नहीं? territorial dispute आम कहि परिबा. That was the legacy कथा तमे कहि परबो, और it was the legacy है ना, और it was the legacy जाको रिटेन करिया पिन चाहउथले मगध है ना. So to this task Ashoka must have set himself as soon as he felt that he was secure. मगध कहले बिहार है ना, प्रेजेंटली मगध कहले बिहार. तो ओडिशा वाज आल्सो ओडिशा बिहार मिसिकी गोटे थिला जानि छै. देन 1936 रे सेपरेट हे गेला. बुझिबो ता पूर्व गोटे बेंगल थिला, ये सब मिसिकी बेंगल थिला. बुझिबो. तो ये देखिबा तो अशोका must have set himself as soon as he felt that was securely established on the throne. तो जेते बोले से throne को आसी गला से भाबले this is the time that I will get back those glories, or मतलब big task for me.
तो ता पे ये बिग टास्क थिला बुझियो ऑलवेज मतलब बिग रूलर दे ऑलवेज सेट द बिग टास्क and the big challenges. The war began the 8 years of the Ashoka's reign. That means reign को तांकर जो time रे तांकर राज्य के time रे. Probably it was 261 BC and the most widely accepted. So 261 BC is widely accepted. बुझियो जते भी historian अछंती सेमने widely accept करते 261 BC. That means it was 3rd century. 261 means 3rd century. Okay, so 3rd century BC, Ashoka took that challenge and attacked the Kalinga. Ashoka's grandfather Chandragupta, जो माने कि had previously attempted to conquer Kalinga but had been repulsed. तो ये मैंने कौन थे repulsed कहते हैं जाको भी दूरी दबा मतलब they were not able to conquer that once repulsed. बुझो so that was but this person was not ready to quit. This person was not ready because that person was having the attitude बुझिपारछन कि attitude थिला कि at any cost I will but make that Kalinga up to my subjugation or my subjection. Subjugate अर्थात मिसेई दबा बुझिपारछन. So that was सेथि पई ये कोन कले निजो को गोटे he I would say committed himself कि at any cost we will do that one the task which is left बुझिपारछन untouched that would be now finished. तो सेथि में after a bloody battle the for the throne जदि हम देखिबा after a bloody battle for the throne after the Bindusara's death Ashoka tried to annex the Kalinga को annex करिबो already he also did that one तापर से जो थे करि देथले तो मेजर कॉजेस हमें देखिबा. अच्छा जो माने ऑनलाइन रो बुझा पड़ो समस्त को क्लियर एनफ टू ऑल थैंक यू. So powerful neighbor now major causes कोन थिला what was the causes for the Kalinga war causes कोन थिला कि causes जदि हम देखबा कि सबुठ इंपोर्टेंट मु तुमको बहुत सारा causes सकाल भी डिस्कस करथले ना पावरफुल नेबर Kalinga was a powerful neighbor और सबुठ इंपोर्टेंट कथा दीटा मतलब कहने जंगल में एक टाइगर होता है तो दीटा तही परिबन बुझिबो से नहीं एक So, ये जदि हमें देखिबा the powerful neighbor the Magadha empire during the Ashoka had surrounded Kalinga in the north west and south. Already मु तुमको सकाळे मैप ड्रा करी देखैथली कि how the Magadha empire was like that or the what was the territorial extension of the Magadha. तो कलिंग गोटे मझिरे रही जाइथिला छोटियाटा और चारि पटे only there was Magadha and Magadha बुझिबो. So ये पूरा तुम देखि परियो from the map. तो ये देखो मैप here you can see the map. So it was whole area was the Magadha whole a whole पूरा देखो blue color only this white patch ये कलिंगा एठी रही जाई गोटे छोटियाटा तेणु करी कि ये केबे चाहू नथला बुझिबोछन that was not affected कले एठी रही पुनी कैपिटल देखो एठी कलिंगर तुम देखिबो कैपिटल ये रहबे तमर मगध जो पाटलिपुत्र एसु मगध एठी रहउछ आ एठी एति अटैक करि पारुनी पूरा अफगानिस्तान जाय पड़िला बुझिबोछन. तो ये प्रॉब्लम गोटे चैलेंजेस थिला हियर यू कैन सी द Kalinga extension up to Ganga to Neki Godavari that was the extension बुझिबोछन. हियर पूरा अमरकंटक बा ईस्टर्न घाट और अमरकंटक टू Neki बे ऑफ बंगाल तो ये थिला Kalinga extension. तेणु करी कि हम देखिया द पॉलिटिकल एक्सपेंशन that is the territory the neighbor powerful जदि हम the powerful neighbor the Magadha empire during Ashoka had surrounded the Kalinga three side from देखि पड़ला आ गोटे side from obviously whatever. The existence of the Kalinga as a powerful neighbor on the border of the Magadha was definitely a threat and that potentiality of the latter as well. कहले याको काहे पाखरे रखिबो आगु को जाई कि असुविधा करिवो better to मतलब finish that one and to annex with us. Thus the Kalinga posed a that is but menace to the grand Magadha empire. बुझिबोछन तो इटा गोटे menace create करछ or the threat menace or threat ये गोटे threat create करिवो एबे न कले बे आगु को करि पारे so better to finish that one बुझिबोछन. So as of now ये गोटे बहुत strong अछि और जदि एबे न करिवो केबे करिवो फॉर एग्जांपल मोदी जी कहले एबे दि 370 न उठिबा केबे उठि पारिबनी तो बेटर आकु एबे ही कर दियो बुझिबोछन. So this is the time
because when you are having a but handsome majority, one of the strongest government ever India is having in the independence, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏତେ majority ରେ ଜିତିଛ, ଏବେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବନି କେବେ ହବ କଥା, ବୁଝିପାରୁଛ। So ये हमें देखिए पड़ेगा, that means that would create the but menace ahead, so it was better to subjugate that one, better to have the subjection, ताको हमें खत्म कर दो, बुझे। So before the Kalinga rose to that extent, the Ashoka wanted to defeat and capture it, कहले देखो ये से जो कहते हैं कि बेको जाए आसिया पूर्व खत्म कर दो, तो ये देखिले कि before Kalinga rose to that extent, कहले ये गोटे menace है कि आसु uncontrol है जाओ and मगध ପାଇଁ problem create करू, before that we will finish that one, तो ये थिला, that means हमको political diplomacy was also there that time, and that was also playing somewhere in the mind of the Magadha's ruler कि it could create a problem ahead, so better to wrap this one before it create any kind of menace ahead, ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା, ତ ହେଇପାରିବ ନା, ବୁଝିପାରିଲ, ବାସ୍ ନିଜ ଇଏରେ ଲେଖିବ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ କହିବା କି କଳିଙ୍ଗ ଦ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ, ଦ ପାୱାରଫୁଲ ନେଇବର, ଯାହାକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଏବେ କରୁନି ଆଗକୁ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦିଅ, ବାସ୍ ଏସେନ୍ସ ହେଲା ଏଇଆ, ପାୱାରଫୁଲ ନେଇବର ଥିଲା। मैप तुम देखिए कि व्हाट वाज द मैप, हियर यू कैन सी द मैप, तो मैप भी ड्रॉ कर दिखाई दो कि फ्रॉम अफगानिस्तान ठू नहीं कि पूरा अप टू आम देखो पांड्यास मतलब साउथ रे, सो एंड दिस टाइम अप टू तुम देखो एपटे म्यांमार प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम म्यांमार, तो बुझिपार, तो ये पूरा तुम देखो ह्यूज एरिया दैट वाज अंडर द चंद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट। नेक्स्ट टाइम देखिए मैप ऑफ एंशिएंट कलिंगा, द मैप ऑफ मौर्यन एम्पायर तुम देख पार, ये केते ह्यूज एम्पायर करथिले मौर्यन एम्पायर। अच्छा जदि तुमको पचारिबो हु डिड मेड द लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडिया, वेदर इट वाज मौर्यन, इट वाज गुप्तास, इट वाज बट मुगल्स और इट वाज ब्रिटिश, हु के करथिले, who did the make largest empire in India, whether it was Magadha or I simple I okay, it was Guptas, na Mughals, na तुम्हारा British, ना तुम्हारा अशोका, ये रहबो तुम्हारा ब्रिटिश, आंसर रहबो ब्रिटिश, ब्रिटिश वर द लार्जेस्ट, कारण तुमर जो ये जो तल पार्ट टाको ब्रिटिश मिसई देइथिला ना, याको भी मिसई देइथिला, याको भी करथिला, ये पूरा पार्ट को अफगानिस्तान अप टू पाकिस्तान ये सब थिला ना, ब्रिटिश अंडर ये सब थिला, बुझिपारछ। हाँ, now second cause हमें देखा है imperialistic design of Ashoka, imperialistic, the second cause रहबो कलिंग war रो, तो first हम देखे कि strong neighbor, फर्स्ट पॉइंट हम देखले कि स्ट्रांग नेबर, अच्छा समस्ते लिखि दउछ ना, एट ए टाइम लिखि देबो, आकु रख नै, बुझिछ ना, द imperialistic design, the imperialistic design means कहले expansion of the territory, बुझिछ ना, तो तांको समान कर एटा गोटे सेतेबल कोन थला ने पैशन कि अचीव कोन करिवो, साइंस टेक तो करिवार नै, बुझिछ ना, तो obviously कौन करबे territory, so by that time the Ashoka that is but accession, the Magadhans empire had spread the most of the parts of India, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା capture करिया पे, तो करिवो काको बाकी जहाँ थिला, so बाकी it was the rest was left, that is the Kalinga, so better to annex that one, and which is left for the so long time that could be neglected, that बुझिबो ऑलरेडी से तर देखिला, जेमती फॉर एग्जांपल तमे जानथो जदी कि जो ब्रिटिश इन द प्रिटेक्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, द कोन काको मिसैतले लॉर्ड डालहाउजी 1756 रे, लॉर्ड डालहाउजी इन द प्रिटेक्स ऑफ मिस गवर्नेंस काको मिसैतले, अवध को, काको अवध को इन द प्रिटेक्स ऑफ बुझिबो माल एडमिनिस्ट्रेशन, जोटा कि तमर जदि 1700 केबे 64 रे कोन हितला, बक्सर हितला, तापर को हबो
ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद 1765 रे कौन है ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद रे कौन कहिथिला कि जो सुजा उद्दला थिला सुजा को कौन थिला सुजा द रूलर ऑफ अवध नवाब ताकू छाड़ी ताकू कौन कहते तांको सहित किछि तांको करे गोटे फ्रेंड कर देले खाली तांतरो कोरा दीटा नहीं गला कौन कले अलाहाबाद एंड कोरा दिसटा डिस्ट्रिक्ट नहीं जिवो पर 50 लाख नहीं जो वार इंडिमनिटी ये सब नहीं कि ताकू छाड़ देथिले बुझि परछन बेंगलुरु आसिला कौन को राइट पाइले दीवानी निजामत रखिबन दीवानीटा रखिबो ना निजामत रखिबो नवाब को देई दबो बुझि परछन आउ कौन करथिले मुगल राजा को आनी अलाहाबाद रखिले रखिले बुझि परछन ना तो ये सेमिति एम्पेरियलिस्टिक अप्रोच रे कौन हुए कि टेरिटोरियल एक्सपांशन कि जदि किछि छाड़ी जाइछि ताकू खत्म कर बुझि परछन सो अशोका हैड आल्सो सेम टाइप ऑफ एम्पेरियलिस्टिक अप्रोच तो तांको अप्रोच रे से कौन कले कि those most of the part of the India that is the geographical that was covered only certain part which is in form of the Kalinga that was left better to annex that one this time कले ये होची टाइम to annex the Kalinga Kalinga को हमें annex कर देबा the independent kingdom of the Kalinga not very far from the center of the gravity of the Magadha and that to be the capital बहुत पाखरे अछि हमें देखिथिले बुझि परछन सेति पई that was what intolerable for the warlike king that is a king like the what that जोटा लिखे चंदाकोश the black Ashoka बुझि परछन तो अशोका ताको केबे टॉलरेट करि परिबोनी के गोटे चंदाकोश the black Ashoka मतलब black Ashoka कहले अशोका black color नो black Ashoka कहले that state of Ashoka when he was very furious he was very बुझि परछन Soka, the Chanda Soka. That means he was very appetite to have the territory for the fight. बुझि परछन तो सही थि पई देन तापर आसीबो कोन धर्माशोक हिजबो बुझि परछन तापर से आसीबो धर्माशोक है ना तापर कहजबो धर्म को आसीजबो जाबियो दैट इज आफ्टर द वार आ कुछ नथला ही विल रिमर्स हिमसेल्फ निजो को बहुत रिपेंट करिवो जे बुझि परछन ब्लड सेड परे तो जाबियो सो फ्रॉम हिमालयस टू द नॉर्थ अप टू मैसूर इन द साउथ and from the Kabul Valley in the northwest to the Bengal in the east, the whole territory was under the sovereignty of Ashoka. So that is a huge territory, except this small part of the Kalinga. An independent kingdom of Kalinga was very, not very far, and that is why he was trying to but capture that one. That is what I mean. आपको point out करें the imperialistic design of Ashoka, being an empire, what emperor, being an emperor. तांकर टार्गेट थला कि केमिति एनेक्स करबा केमिति आमे कोन करबा कि आगु को केमिति हाउ टेरिटरी को एक्सपांड करबा बट सब जिनसर गोटे लिमिट थाए ब्रेकिंग पॉइंट थाए है ना तो सब जिनसर गोटे ब्रेकिंग पॉइंट थाए मनीष जेतरे फेल हुए कोन पई ना ब्रेकिंग पॉइंट पर जदि किछि जिंस को अटेम्प्ट करबा यू विल फेल डाउन अर्थात कोन जने सिविल सर्विस रे फेल हुए इथि पई बिकॉज़ तार कंफर्ट जोन बाहर आसी जाए the breaking point आसी जाए सेति पे फेल हुए बुझि परछन तो सेति पे when it is beyond the breaking point that ought to be fall down तो falling हबो हिबो आ से ताली तम को ताली समस्त फेल हो ना that breaking point could be extended by putting effort by but doing माने कोन कहते रिपीट ऑफ जाको कहजे ना कि कोन जाको कहजे ना कि कोन कोनथि बुझि परछन जाको नै सेटे नो कोन कोनथि तक गोटे तार गोटे प्रोवर्बटा अछि बुझि परछन कि हमें कोन के मन पन छाडा so only we can extend that breaking point suppose તમે 80 break होतला then 80 breaking point would be there but only we can extend that the breaking point so that will comes under your ambit तम ambit under है ना से तो से ब्रेकिंग पॉइंट को तुम एक्सटेंड करि परिबो बाय पुटिंग एफर्ट सो दैट आको ही परिबो तो इंडिपेंडेंस को से दैट मींस ये सेकंड पॉइंट हम देखि देले नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑलरेडी मो सकाल भी कहथि कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है ना ये टेरिटोरियल एक्सपांशन कथा भी हम डिस्कस करथले मॉर्निंग रे द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ कलिंगा सो कलिंगा वाज अ वास्ट नेचुरल रिसोर्स the wealth of this particular land and the inland trade and also the sea over strait both were there
Kalinga, the location of Kalinga, it was a strategic location. The Magadha, they didn't had accessibility to the sea because Kalinga ର ଥିଲା କୋଉଠି from what Godavari to Ganga पूरा coastal area को dominate करके रखिଥିଲା and तळକୁ गले Pandyas, Cholas they are captured से ताकू capture करके रखिछि so they didn't had any kind of accessibility to the coastal area so navigation problem thila they were having wealth in terms of the inland trade and the vast overseas trade with हमको देखा जो overseas trade in the Indian Ocean. That means a Bay of Bengal is a part of Indian Ocean. ये पूरा तुम्हें clear हो. That means wealth from the land and from the water as well. The trade, the prosperity in terms of the trade. Then the Kalinga Putras, they were बुझियो जेमति जो हमरो बाली यात्रा है तो they were having trade with the जो Bali Indonesia Bali. So the Mauryas had foreign relation with the contemporary like the Hellenistic powers. Hellenistic power कहले जो ग्रीक बुझिपारछ ग्रीक एंड हमर जो ईरान एक्जेक्टली एटा ईरान आसे जो हेलेनिस्टिक टा ईरान आर्ट ऑफ ईरान तो हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस को आसे ताकू माने एटा गोटे हेलेनिस्टिक जो तमर पावर ये ईरान ए सब रीजन रे थिला ईरान इराक जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थिला ये रीजन रे थिला है ना ये थिला सो दे दैट मींस पावर they had not maintained commercial relation with them तो ये दीदी कंटेम्पोररी थिला बट कमर्शियल रिलेशन सेमते किछि खास नथिला it may also be pointed out that the Mauryas by the time had not built a naval power but सेतोल नथिला बुझि परछ इतने naval power तांको नथिला because of the accessibility नथिला ना औ जेहेतु किछि ट्रेड वगैरह हो नथिला तो हेतबे naval power नथिला तांको पकरे तो वेस्ट बहुत दूर रे भी तो अछि ना बुझि परछ तो naval power in नथिला the superintendent of the shipping हम देखि परिबा mentioned अच्छा ये कोन है लिखो that is what नाभा दीक्षा है ना the superintendent of the shipping mentioned by the Kautilya in arth that is Arthashastra was in charge of the policies of the river lake sea shore etc ये माने ताको चार्ज करथिले so the economic prosperity of Kalinga became eyesore for the Magadha कहना ओडिशा रो prosperity the Kalinga रो prosperity trade रो सब बहुत थिला so that is why they were not tolerating that one बुझो तो तांको पे it was eyesore कि हां ये बहुत ही prosperity धीरे धीरे बढ़ी जाउ कि better to if we will able to capture that one that prosperity would be in our hand बुझो तो सत्य पे एटा को कराइतला then also commercial factors अच्छा इटा trade करि परियो trade and commerce then commercial factors next we will go to the commercial factors the commercial factor जदि हम देखिबा in the commerce Kalinga was a very great that means what competitor of the Magadha कारण आप पाखरे inland trade थिला आप पाखरे sea borne trade थिला तो trade थिला that is the important trade route passes through the that means from the Gangetic Valley to the Deccan and further to the south passes through the Kalinga जोटा मु सकाळी तुमको कहितली कि साउथ को मूव करे कहले they have to take a different route है ना the shortest route could have been from the Kalinga itself so route तांको पई difficult करूथला है ना the facilitating her trade and the commerce तो तांको पई difficult होउथला कि neither they had the what I mean के sea borne trade nor they had the land route कारण सेपटे गले deep jungle तमे प्लेन पटे गले टेके accessibility पाइबो बट पहाड़ पटे जीवो केमिति भाबो तमे जो वेस्टर्न ओडिसा बा सेंट्रल ओडिसा सेपटे जो मूव करिवो तो मूव करे डिफिकल्ट ना दैट इज a deep forest पूरा जंगल ये भी जंगल थिला बट ये प्लेन एरिया ना बुझि परछ तो दैट इज a deep forest देखि मूव करिवा ट्रेड करे त बहुत डिफिकल्ट सो बेटर टू हैव द प्लेन थ्रू द प्लेन accessibility through the plane though the Magadha had foreign relation and huge internal resource it suffered from the commercial crisis due to the lack of trade route आपकरे खास नथला बुझि परछ बट ओडिसा पकर जति हम देखो तो उत्कल दैट टाइम कलिंगा they were having inland trade with through the rivers then हमें कहबा external trade through the seashore and also having the plain areas and strategic location from the Ganga to Godavari the existence of the flourishing Kalinga with her trade and the commerce was but adversely affecting the economy of the Mauryan
यार इकोनॉमी बूम हो जाउची बट तार बूम होनी तेणुक गोटे इम्पेरेटिव्स थिला कि ट्रेड रूट सब कैप्चर करवा बुझे तो ये थिला एडवर्स कहीं यार ग्रोथ जो होची ओबियसली तार ग्रोथ हो नथला सेतमे आप इंपोर्टेंट सो कमर्शियल फैक्टर्स रे जदि हम देखबा इंपोर्टेंट ट्रेड रूट्स वर पासिंग थ्रू द कलिंगा from the Ganga to Godavari, I mean, this were territory. So they wanted to capture that important trade route so that their flourished in terms of the trade and commerce would be enhanced. The enhancement career. Then they were suffering from the commercial crisis. I mean, due to the what lack of routes, trade routes. Say trade route को capture करके trade को boost करिया पिन चाहते because ମୁଁ जोटा कहली कि deep forest देखि move करिबा difficult and through the plain region horse माने move करि परिबो जो horse elephant they would be easily moved through the plain that time the mode of transportation elephant horse एमान को driven करूथिले so it was very difficult through the deep jungle भाबो कोरापुट एपट दे जाय कि केमति जीवो तो ताको बहुत difficult हो better to pass through this way the existence of the flourishing Kalinga ये तो हमें लिखिथिले है ना with a trade and the commerce that was adversely affecting the economy of Mauryan empire ये ताको impact करूथिला then ମୁଁ तुमको last କହିଥିଲି कि the Ashoka जो jewels थे ना the jewels of Ashoka that was stolen by the Nagas and the Nagas were ruling to the south and the west southwest central India but having trade with Kalinga ये जो Nagas थिला they were having very good trade relation with the Kalinga and there was a talk like the histories like certain things are also don't have evidences तेणुकर कि ये जो फिफ्थ पॉइंट तुम देखियो के कॉजेस रो तो व्हाट वाज द फिफ्थ पॉइंट फॉर द और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ द Kalinga war that is the stealing of the Ashoka's jewels by the Nagas according to the description of the Lama that is what Tarant a Tibetan author the Nagas stole away the jewels of Ashoka ये that is the Lama Tarant they were the monks बुझिपारछन Tibetan's author and the monks ये कहले कि ये गोटे इशू थिला कि अशोकार ज्वेल को चोरी करथिला अशोक ऑब्वियसली राजा बुझिबछन सो द एम्परर बिकम एंग्री एंड कॉन्क्वेड दैट टेरिटरी कॉन्कर्ड करथिला एंड कॉन्कर्ड द टेरिटरी बोली कहजे दिस नागास वेर आइडेंटिफाइड विथ द व्हाट सी फेरिंग पीपल ऑफ कलिंगा मु तुम कहली दे वर हैविंग ट्रेड विथ कलिंगा दे वर डूइंग ट्रेड सो अशोका बिलीव्ड कि द कलिंगा किंग मतलब शेल्टर्ड देम and that was a pride issue कि राजांकर ज्वेल को नहीं बुझिपारछन so Ashoka was not ready to now this time मतलब that was itching for the war he was having all that like बुझिपारछन all that मतलब कोन कि the fire was inside the belly and that was burst off in form of that was some sort of excuse was needed बुझिपारछन so that was only a conductor that is the lightning conductor जेमती तमर बुझिपारछ किए कहउथिले तो विपिन चंद्र कौन कहते देखिए दी जन भितर थी गोटे एक्सक्यूज खोजते कौ दिन झगड़ा हबर राग थी बुझिपार तो ये पॉइंट दैट मीन्स लाइक लाइटिंग कंडक्टर किए कहते विपिन चंद्र कि ये जो तुम 1857 जो 1857 जो रिवोल्ट होता दैट वाज नॉट ए ऑल ऑफ ए सडन रिवोल्ट जो सिपाही म्यूटनी दैट वाज सिंपल ए लाइटनिंग कंडक्टर गोटे बुझ स्पार्क वाज नीडेड टू हैव दैट बुझ ऑलरेडी पीपल्स वर डिससैटिस्फाइड all of a sudden केमती हो गला एते बड़ सिपाही म्यूटनी ए स्पार्क वाज ओनली नीडेड लोक माने फ्यूरियस थिले बुझिबो तो ज्वेल्स तो ये थिला नागस वर आइडेंटिफाइड विथ द पीपल ऑफ द Kalinga those वर having the trade in order to take the revenge Ashoka invaded the Kalinga in 2061 BC so this is तमे कॉजेस सब हमें देखि देले बाकी तो लेजेंड ऑफ कारुबाकी ये तो कहिथिल तमर द फिशरमैन्स गर्ल्स she was beauty enough and that the beauty was attracted है ना her beauty attracted the Ashoka ये गप्प does not have any backing behind that this story does not have any backing only it's like like the tale of the story people's tale बुझिबो तो आर किछि backing नहीं but you could write but this point should be at the end of your answer but somebody is writing in the beginning of the answer बुझिबो that will shows the immaturity of that answer बुझिबो याकू लास्ट रे रखो बुझिबो कारुबाकी
The strange story regarding the cause of the Kalinga war prevails among the fishermen community, that is not among all community. Only fishermen ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତ ଯାହା ବି ହଉ the eastern coast of Odisha those who are living believe କରାଯାଏ according to this the fishermen community କୁହନ୍ତି कि the Kalinga को जदि war ହେଇଥିଲା Ashoka if Ashoka did the war against the Kalinga that was the reason to that what to have the Karuvaki. According to this ଆମେ ଦେଖିବା the Ashoka invaded the Kalinga being but infuriated by the beauty of Karuvaki. Sorry, it would be infatuated, the daughter of a fisherman, and that is what the fiance of the crown kings of Kalinga. ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ବୁଝିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ରାଜି ନଥିଲେ କି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରୁ. Though this fact appears absurd, but it can't be rejected. ସେ କହୁଛି ଇଏ absurd but can't be rejected like outright because of the queen's edict. ତ କୋଉଠି କୋଉଠି ଲେଖା ବି ଅଛି queen's edict support କରୁଛି है ना. It is also known that Ashoka had a queen named Karubhaki Kuajai, who was the mother of that is what Tivara, the son of Ashoka. ସେଥିପାଇଁ ବିଲିଭ୍ କରାଯାଏ କି ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି might be that is true. But last as per religion cause तो आम देखी ये तो दैट मीन्स आम जानते कि सोशल कजेस आपको पुट कर तो आम पॉलिटिकल कजेस देखिले इकोनॉमिक कजेस देखिले सोशल ना इट कुड बी रिलीजन कजेस बुझे सो दैट इज व्हाट तिभारा तो यहाँ टिके मन रखिबो है ना तांको क्वीन दैट इज व्हाट कारुभाकी द मदर ऑफ व्हाट तिभारा द सन ऑफ अशोका टिके लिंक करके मन रखि परिबो. सेकंड वाइफ किसी दरकार नहीं जानिबा फास्ट किए सेकेंड केते पुओ किसी दरकार. Religion factors. Now, potentially, religion was another potential factor for the Ashoka invasion of Kalinga. तो ये भी गोटे potential factors बोली कुहाଯାए बुझिपारछन. तो एथिरे कोन करबा तो बिफोर द कलिंगा war Ashoka was that is what devout of Saiva. ये Saiva थिले बुझियो तापर बुद्धिज्म को पळी जिवे ता पूर्व Saiva थिले devout of Saiva because ये जो तमरो but the Nandas were the follower of Jainas. Nandas were the followers of Jaina. But Magadhas जदि हम देख Mauryan dynasty एमने बुद्धिज्म को फॉलो करते है ना जहाँ भी हो. Though it is difficult to ascertain what was the prevalent or what was the prevalent from of the religion in Kalinga with the tolerance degree of certainty, it can be stated that the Buddhism and not the Brahminism or the Saivism was prevailing in Kalinga. जहाँ भी हो तो रिलीजन गोटे एत खास भी नथला मतलब जहाँ भी आपको भी डिनाई करिबनी ये गोटे फैक्ट बोली कि जदि आम कहबा ये तो ता पूर्व ये जने थिले तापर धीरे 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 से कोन हिजबो तो तापर आसी जो बुद्धिज्म को फॉलो करिया को लागिवो. दो इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन दैट इट वाज प्रिवेलेंट फ्रॉम द कलिंग रे थिला कि नहीं डिफिकल्ट बट टॉलरेंस डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कैन बी स्टेटेड दैट द बुद्धिज्म एंड नॉट द ब्राह्मणिज्म द साइविज्म वाज प्रिवेलिंग इन कलिंग ता पूर्व बुद्धिज्म थिला बोली बिलीव करा जाय कलिंग रे थिला. Ashoka might have decided to wage a holy war against the Kalinga to teach the Buddhist a lesson. कारण से शैव थिले शैव भक्त थिले बुझिपारछन सेथिबाई. However, this is a controversial issue. कारण पुनी बुद्धिस्ट से पुनी नेले पैट्रोनाइज कले ताको प्रमोट कले तो छाड़ दे बुझिपारछन कंट्रोवर्शियल इश्यू से गोटे. Then the nature of Kalinga war. एबे हम देखो Kalinga war र नेचर कोन थिला. तो these were the आम देखा कि कजेस थिला कलिंग वार बुझिपारछन. एबे हम देखो नेचर ऑब्वियसली कलिंग वार जदि तुम देखिबो आरो देखो सो लेट्स से इट इज लाइक 6 लाख मेन तो देखो इथरे कोन हितला 261 BC
डेफिनेटली हम देखा अच्छा या टिके इनिशियल देख it लिखा है कि no war in the history of India as important either for the intensity or for its result as the Kalinga war of Ashoka कारण ये बहुत important थिला बुझिपरछ ना सेति पे कह जाए that is the much anticipated Kalinga war took place ये 261 BC रही था जाको known from the Megasthenes account कारण ऑलरेडी हम कहते कलिंग वार जहाँ भी जानिबो मेगास्थेनेस अकाउंट ही जानिबो बुझिपरछ ना जो थरे कह जाए तांकर आर्मी केते थिला देखो that accounts that Magadha army during the Chandragupta Maurya 6 lakh थिला केवल मेन थिले जब ये नंबर किसी दरकार नहीं केते थिले कौन एलिफेंट बस सिंपल हमें कहबा all that war facts is known through the Megasthenes account of Indica बुझिपरछ ना who was in the court of हमें कहबा Chandragupta Maurya definitely it would have increased during the Ashoka time रे बढ़ी जाइथिला ये जहाँ 6 लाख 7 8 लाख जाउचे अब Ashoka invade करिबा कलिंग from the north west and south this is very important three sides to attack करिबे however the Kalingas resisted that attack vehemently so Ashoka attack करथिला three sides बुझिपरछ that means it was a free plant and attacked from the all side because all side was surrounded by the Magathas. The Magathas were surrounded, that means from the three sides, the Kalinga was surrounded and he did the attack from the three sides as well. The war took place on the bank of the river Daya, already tame janicho, near the Dhauli, present day Dhauli, and the rock edict 13 mention the horror of the Kalinga war. This is a major rock edict. ये होची गोटे major rock edict in Kabul. Kandahar. That is the word Kandahar, Afghanistan. ये जो तुमरो रॉक एडिक्ट 13 अछि that is in Kandahar, Afghanistan रो अछि ये ओडिसा रे नहीं which talks about the Kalinga war सेथरे लिखा हिची बुझिबोछ Kalinga is a major rock edict तो that means Kalinga war हमें को रॉक एडिक्ट तो जानो रॉक एडिक्ट 13 जोटा कि गोटे मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका हां सेथरो हमको जणा पड़े कांदाहार अफगानिस्तान है ना ये तार लोकेशन बुझियो दैट रॉक एडिक्ट मतलब जो थे रॉक रे लिखा जाई inscription so from that it is known about the Kalinga war the how horror how different how difficult that war and what was the pain that caused to the civilians or to the local people बुझियो ना तो obviously हम कहें जो तरह के lakhs of people died तो believe करा जाए कि lakhs of people died thousands got wounded and the river the Daya river that turned into a bloodshed and the red color ही जाइत्रा बोली believe करा जाए and ये number does not matter कि how much people were engaged in the war simple on an average the lakhs people died the thousands got wounded that was horror है ना and the war the nature of the war it exactly लिखा है ही नहीं the nature of the war was it was fought through the shield through the sword यदि हमें देखा it was like a what I would say like a tribal war it was like a tribal warfare that means एथिरे तमरो कोन रहइबो sword रहइबो एथिरे sword रहइबो हां कि नहीं एथिरे sword यूज हबो here would be arrow भी यूज होई परिबो ना arrow हबो arrow भी यूज हबो तो गन तो एमती लिखी हबो so it was a traditional warfare से टाइम रे जदि हम देखिबा it was a traditional warfare हाँ having the sword सबटु important weapons थिला तमरो जो shield थिला जो ढाल जाकु कहा जाय sword रहइबो है ना sword रहइबो shield रहइबो sword रहइबो so these were the traditional हम कहबा weapons they were using that time and also कार जो sword रहइबो that was the strongest थिला believe करा जाय apart from that तमरो arrow वगैरह तो रहइबो है ना arrow ये सब तमरो रहइबो which were used during the war तो war was a हम कहबा और simple तमे ताकू guerrilla warfare भी किछि फॉर्म रे भी कहि परिबो it was in form of certain form of guerrilla warfare करे जो जंगल रे लुचि की वार करबा बुझ परछे तो किछि some sort of हम कहि परिबा the war was fought in plain area
सब इंपोर्टेंट कथा वार टा प्लेन एरिया रे हितला कारण जो धौली स्तूप अछि ये प्लेन एरिया रे अछि तो इट वाज प्लेन सेट पे गरिला वारफेयर को लिखि हेबो नाही बुझि परछन तो सम सॉर्ट ऑफ हां एमते नै कि से फॉरेस्ट न थिला बुझि परछन सो ये सेट पे बेटर कि अवॉइड दिस वर्ड गरिला वारफेयर बेटर इट वुड बी हां तो शील्ड कहि परबो स्वॉर्ड कहि परबो एरो कहि परबो दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग द वार result next time result को आसीबा तो what was the result of the Kalinga war ये थिला पूरा कलिंग वार रे हम कॉजेस देखले है ना नाउ कम्स टू द कलिंग वार रिजल्ट आउटकम कोन outcome is that the next to the battle it like aftermath of the battle of the Kalinga the river turning next to the battlefield turned to be the blood of slain more than 1.5 lakhs Kalinga warrior died and the lakhs of Ashoka's own warriors were also among the slain so that means more than bhavo dipoto side to mari tanko side to be lakhs tanko side to 1.5 lakhs and that brought the miseries not only to those who took the arms but to large number of the civil population as well जोटा मैं तुमको कहली ये that is the what that means lakhs of people died both end रे खत्म है जी है ना ये river side and obviously ये तो मुझे देखो with that victory of the Ashoka in the Kalinga was annexed to the Magadha Empire and it constituted its fifth province ये तार फिफ्थ प्रोविंस है गला and the latest to the Magadha Empire and the latest to the Magadha Empire हे करिवो and next है गला so ये भी देखिबा the fourth province the other fourth हैला तमरो that is what Prachya that is Uttarapatha Avanti and Dakshinapatha having the capitals of Magadha and Taxila, Vijayana and Suvarnagiri respectively. Obviously, I may kaiba and these were the capitals like Vijayana Jemti. Ujjain kara Avanti. Avanti capital Ujjain. One of the ancient city जो महाकालेश्वर temple बुझी पड़ते one of the most ancient city Ujjain Shipra river उज्जैन रे कोन अछि रिवर सिप्रा बुझि परछन आउ सेठी कोन हुए तमरो कुंभ मेला बुझि परछन कुंभ मेला भी हुए सेठी तो ये ऑलरेडी देखो and Tosali was the capital of Kalinga and the center of political activities for the Mauryan administration in Kalinga देखो कलिंग जेतरे annexed हे गेला देन तापर एटा तोसाली हे गेला capital for the Kalinga and the center of political activities and the Mauryan administration in Kalinga Kalinga नगर सेटा कहबो श्रीकाकुलम कहबनी श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट रे कलिंग नगर थिला बुझि परछन कैपिटल ऑफ कलिंग सिंपल था को कहबे है ना देन आफ्टरमाथ तापरे कोन हैला हम देखिबा Ashoka had seen the bloodshed with his own eyes and felt that he was cause of the destruction. बुझियो निजे को निजे मतलब टिके repent कले and the whole Kalinga was plundered and destroyed. Thousands men and women were deported. Ashoka after seeing this he was filled with the sorrow and remorse. Remorse माने बुझी पारो दुख प्रकाश कले है ना मतलब बहुत दुख प्रकाश कले तो तापरे सापरे एबे चेंज हे जो चेंज फ्रॉम द चंदा अशोक टू धर्म अशोक एबे धर्म पथ को आसीबे केले सब बुझी परछन खत्म जहां थिला एबे मोर ड्रीम एवरीथिंग इज नाउ अचीव्ड तो एबे सेते लोक बुढ़ा हे गेले धर्म पथ को आपने बुझी परछन the Kalinga war that had brought a deep feeling for the remorse in the mind of Ashoka set been change heitla and that is why there is a Shanti Stupa obviously jancho Shanti Stupa again bartaman tame dekhi paru ki Shanti Stupa अछि that talks about the peace the world of peace Shanti Stupa ba se world of peace के world peace को promote करिया पे सेठी तको रखाई छै Shanti Stupa the Kalinga war ताको माइंड रे थिला he drew himself
close towards the Buddhism. ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆସିଗଲେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ को प्रचार करिवे लागि पैट्रोनाइज करिवे बुझिबस ना और जेहेतु अशोका पैट्रोनाइज करिवे when like the one of the strongest ruler ever in the history of India or let's say subcontinent started to patronizing the Buddhism or any religion, that religion ought to be or that ought to will have spread its wing and the areas their prosperity their obviously popularity बढ़िबो. When leader itself adapting the culture, then why not the peoples? बुझिपारछ ना तो that will enhance सेति पई जैनिज्म ऊपर बुद्धिज्म टिके हावी हे गला बुझिबो because of the last ruler they supported the Buddhism. Okay, so ye then after the Kalinga war he was converted to the Buddhism by what, that is the Upagupta, a Buddhist monk in that is what Nigrotha, the 7 years old son of Asoka elder's brother Sumana, whom he had killed, or that is what Mogali Puttatisa, the president of the third Buddhist council. तो बाकी बुद्धिस्ट अच्छा तुम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई ना पढ़ाई और ठीक अच्छी ताले तो सिंपल दैट मीन्स हम देखा उपगुप्त हु मतलब आम कहवा कि पुस्ट हिम बुझे टू अडॉप्ट द बुद्धिज्म को बुद्धिस्ट मॉन्क निग्रोथा 7 year old of the son Asoka elder brothers Sumana. तो ये देखो whatever the fact might be Asoka accepted the Buddhism after the Kalinga war. बस एति तुमको मन रखा पड़िबो एबे से धर्म पछको आसीबो. He quitted his all the violence approach by Asoka रो जो बुझबो चाहिए चंदा Asoka to finish. Now it's include with the dharma Asoka. Accepted the path of religion, the path of peace. जाको हम कहबा path of peace, simple peace. Now Asoka response to the Kalinga war is recorded in the edict of Asoka. तांकर बहुत सारा edict रे सेटा लिखा जाई छि से तांको परे कोन हला. The Kalinga war was promoted by Asoka, already a non that is what engaged Buddhist to devote the rest of the life ahimsa non-violence. Ebe is non-violence start ho and to that means and to the what dharma vijay, the victory through the dharma है ना. एबे कहबो एबे आउ पॉलिटिकल एनेक्सेशन हबन एबे धर्म द्वारा मतलब लोकन को शांतिपूर्ण उपाय रे मिसेइबा बुझबो तो दैट टारगेट इथला तमरो टारगेट. तो ये भी आउ वायलेंस अप्रोच में नाउ देयर वुड बी नॉन वायलेंस अप्रोच ता द्वारा से ताको कोन करबो एनेक्स करबो है ना. ई रहबो एबे आसो कोन तमरो धर्म विजय. Following the conquest of Kalinga, Asoka ended the military expansion of the empire. एबे खत्म आउ करिबा नहीं and led the empire through more than 40 years of relative peace, harmony and prosperity. ता परे भी 40 वर्ष से देखो peace, harmony and prosperity बंचे छी मतलब मगध को हम कहबा बस peace, harmony and prosperity. Obviously से ख्वाब तो रहबो ना कि पुनी काबे आउ थरे रिटर्न बैक कले निज प्रीवियस स्टेट को बुझी पतो के नहीं. सो ये गोटे भी डर रहबो लोकन को भीतर कि might be he returned to the previous state that will again create a havoc in the mind बुझी पड़छन. तो जा भी हो he quitted that one and then he followed the path of peace prosperity. ये सब तुम कर परियो. then question देखि दियो. खारबल ता परे हिसले कलिंग वार परे खारबल सेतो खारबल नथले सेतबे किसी एविडेंस नहीं कि हु वाज द रूलर. मेन कथा होची जो कलिंग वार हेतला एपोटे रूलर किए थिले कि तार एविडेंस नहीं ना कि हु वाज द एग्जैक्ट रूलर किए थिले तार हिस्ट्री रे किसी एविडेंस नहीं. तो हम जानिबा केमती बस खाली कहबे रूलर थिले बुझ परछ नहीं. तो सेमिति किसी डिफाइंड रूलर एविडेंस नहीं हिस्ट्री रे.
कारण मु तुमको कहूँ कि हिस्ट्री वाज नॉट ए सब्जेक्ट से समय लोक मैंने एत पैशन ना हिस्ट्री लिखा ये ग्रीक गोटे दिस इज ए ट्रेडिशन ऑफ ग्रीक पीपल चाइनीज पीपल ग्रीक पीपल माने हिस्ट्री लिखुले बुझीपे आउ तुम थी कौन इजिप्टियंस इंडिया रे हिस्ट्री लिखु ना सब प्रॉब्लम है कि इंडिया रे जो ये हिस्ट्री आज ट्रेडिशन नाला हिस्ट्री हिस्ट्रीटा भल खराब आम जज करें हिस्ट्री इज ए हिस्ट्री डोंट जज इट हिस्ट्री को नेवर ट्राई टू जज द हिस्ट्री हिस्ट्री शुड बी लेफ्ट एज ए हिस्ट्री देख हिस्ट्री को एथि लिखा जाए कि हिस्ट्री रू किसी जिनस आम जाना तुम भगवत गीता पढ़ुच कौन पे पढ़ुच कह कि सर्टन थिंग टू लर्न फ्रॉम दैट एंड इट्स सेल्फ ए हिस्ट्री से भी तो गोटे हिस्ट्री तो हिस्ट्री कौन थाए हिस्ट्री रू किसी जिनस शिखा एंड वी शुड नॉट कमिट अगेन ताको रिपीट न करवा बुझीपार तो से हिस्ट्री को शिखा पड़े सो द राइट नोट ऑन द कलिंग वार कॉजेस कौन अच्छी रिजल्ट कौन रही है मेजर टेकन्स टुवर्ड्स आफ्टर द कलिंग वार अशोका कौन करे तो दिस वुड बी एंड ऑफ कलिंग वार एबे किसी एमसीक्यू तुम पाखरे भी अच्छी हाँ